इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में हम देश, दुनिया और की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताज़ा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार उद्यन रे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डेंग। Thank you, Vishal. Yes, the headlines, friends. PM to participate in India's decade. Chips for Vikasit Bharat lay the foundation for 3 semiconductor projects worth 1.25 lakh crore. After a flat to positive start, the market extended the gains. Sensex gains 165 points. Nifty closes at 22,335. And in the global oil market, intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडियाज डेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लाभ के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 165 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,335 पर पहुंचा और वैश्विक तेल बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $82.70 प्रति बैरल के आसपास कर रहा कारोबार। Well, Prime Minister Narendra Modi will participate in India's decade Chips for Vikasit Bharat and lay the foundation stone of 3 semiconductor projects worth about 1.25 lakh crore rupees tomorrow through video conferencing. The foundation stone will be laid for the semiconductor fabrication facility at the Dholera Special Investment Region DSIR in Gujarat, an outsourced semiconductor assembly and test OSAT facility in Assam and Gujarat. The projects are in line with the vision of the Prime Minister to position India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development, fostering the creation of employment opportunities for nation's youth. The units are slated to provide employment to thousands of youth in the semiconductor industry, as well as catalyze employment generation in related sectors such as electronics and telecom. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियाज डेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वे देश भर के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा और असम तथा गुजरात में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट OSAT केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं से भारत प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। Vishal, do you remember during COVID period when there was extreme shortage of semiconductors because they were not being manufactured? Just after COVID, anyone who wanted a car had to wait for a very long time because there were no semiconductors available, and any vehicle takes hundreds of these chips. So it's just right. It's such a great vision of the Prime Minister because it has a long incubation period. आज आप सेट करेंगे, आज आप फाउंडेशन स्टोर ले करेंगे तो इसका हमें
कुछ समय के बाद सेमीकंडक्टर हमारे हाथ में आएगा। जी लालिमा, ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया कि कितनी ज़रूरत होती है सेमीकंडक्टर्स की, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के क्षेत्र में भी सेमीकंडक्टर्स की बहुत ही अहम भूमिका है। और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में कुछ ही देशों का इसका जो निर्माण होता है सेमीकंडक्टर्स का, इसमें कुछ ही देशों की अभी तक इसमें एक तरीके से कह लीजिए कि मोनोपोली थी, लेकिन अब भारत भी सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रधानमंत्री आधारशिला रखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के निर्माण से जुड़ी हुई। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उद्यन रे। उद्यन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। Udin, if I may interrupt, Vishal, you just talked about the manufacturing of semiconductor units in India. PM will lay the foundation stone, Udin, tomorrow. We aim at not just being self-sufficient, we also aim at being an exporter, just as we have been doing in defense now recently. Right, Udayan? Absolutely, and the government has made it clear that they just don't want some manufacturing facilities to happen. They want to be one of the leaders in this area. But having said that, as an aspiration, that's fantastic. As a start point, it is very important because you want to catch up. We have seen how important semiconductors are, and the long car waiting lists and the consumer durable issues. Fridge, everything has a semiconductor today. Absolutely. Everything, and especially defense, So we are getting to see that. So that will crunch we'll have to leapfrog. But having said that, there are lots. Semiconductors have moved so far ahead that it will take a lot of doing. That's a hard work of decades, not some years. So apart from all the infrastructure that we are talking about, whether it's power, water, and what have you, you'll need very good manpower. So even as we do that, all these things will have to happen simultaneously. So Lalim, it's almost like you're riding a bicycle, you're whistling also, and you're looking around also, and maybe thinking about something that's coming ahead also. It's like multitasking of the highest order. So it's a great start. I mean, you want to move and you want to start with a bang. You must need ambitious targets. But anybody who you would talk to, you wouldn't know that there's a long road ahead. जी, दक्षिण कोरिया, चीन, ऐसे कुछ देशों का सेमीकंडक्टर निर्माण में काफ़ी एक अच्छा दखल है और काफ़ी एक अधिकार भी है उनका। इसके लिए जो एक ज़रूरी टेक्नोलॉजी उद्यम जो ज़रूरी है, क्या हमें अभी इतना हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है कि हम सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसी गुत्थी है और ये ऐसा कोड है जो कि सब क्रैक करना चाहते हैं। तो आप देखिए, ताइवान में TSMC, मैं डिज़ाइनिंग के बारे में बात करूँ, मैं डिज़ाइनिंग और उसके साथ जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बातचीत करें, ताइवान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि TSMC जैसी हुनर चिप मैन्युफैक्चरिंग उस छोटे उसके वो तो बाकी किसी के पास है नहीं। और चीन भी इस रेस में है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया का भी आपने नाम लिया। सो ये कुछ कंपनियां हैं, ये कुछ देश हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और जो कंपनियां काम कर रही हैं इनके ऊपर, वो एक नेशनल एसेट है। तो ये उस दर्जे तक पहुंच गया है। जैसे स्टीम इंजन का एक रोल था, जैसे तेल के कुएं का एक रोल रहा 100 साल तक, ये उसी तरीके से पूरा जो चेन से सीधे रेयर अर्थ से लेके चिप डिज़ाइनिंग से लेके चिप मैन्युफैक्चरिंग तक, ये जो पूरा चेन है वो आगे चल के हमारे फ्यूचर के लिए क्रिटिकल बन जाएगा। जिसके पास इसका वर्चस्व रहेगा, उसका दबदबा दुनिया में रहेगा। बिल्कुल, आप मेरे मुंह से बात छीन। And then when we talk of semiconductor setting up a unit like that, not only would it give employment opportunities to our own people, it will also give a lot of fillip to the MSMEs which will be involved in the sector. Absolutely. What also happens, Lalima, look at the fantastic progress that we are making in space startups. Yes. It is beyond phenomenal. I mean, the phenomenal is you leave behind that. So this is what exactly we are going to look at when these things happen. All these associated things are going to happen side by side. Mm-hmm. Right now, let's go in for a short commercial break, friends, and we'll be back very soon. Stay tuned. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ
वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। उतार चढ़ाव भरे एक और सत्र में आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार देखा गया। सकारात्मक शुरुआत के बाद 7 दिन के कारोबार के दौरान बाजार में तेजी का रुख रहा, लेकिन बाद में आईटी शेयरों को छोड़कर बाजार में बिकवाली के बीच मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 165 अंक की बढ़त से 0.2% ऊपर 73,667 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 3 अंक की मामूली वृद्धि से 22,335 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.3% की गिरावट और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.1% के नुकसान के साथ बंद हुए। In yet another volatile session today, the Indian benchmark indices ended on a mixed note. After a flat to positive start, the markets extended the gains as the day progressed, but witnessed profit booking amid selling across the sectors, barring information technology. The Sensex ended 165 points or 0.2% up at 73,667. Nifty also raised 3 points or 0.1% to close at 22,335. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down by 1.3% and the small-cap index lost 2.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 8 companies appreciated while those of 22 companies declined. HDFC Bank surged 2.3%, TCS gained 1.6%, and Maruti rose 0.9%. On the other side, SBI declined 1.8%, JSW Steel fell 1.4%, and ITC slipped 1.2%. In sectoral indices at the BSE, only 2 sectors gained, while 18 declined. Tech sector gained 0.6%, and IT sector rose 0.4%. On the other side, realty sector fell 3.5%, industrial, commodities and services sectors slipped 1.7%. The overall market breadth was negative as shares of 669 companies appreciated while those of 3,224 declined. A total of 74 companies remain unchanged. So, Udayan, what have you got to say about the Sensex at 73,667? It's been a volatile over the last few days. Yeah, one thing, I haven't seen the disaggregated data, but what obviously is happening, Lalima, is that the large and prominent companies, to put it in simple words or in a short, is large cap. So those large cap stocks, I suspect, have done well, and the others, which is namely the mid caps and small caps, perhaps may not have done as well today. And primarily, there has been this whole conversation going around about froth and excesses happening out there. These things typically happen when things happen too fast, too quickly, and at a space where you feel that it might just be the underbelly, because small cap is not exactly the superstar category. They're on their way up, so the business models, etc., are not so established, and they don't have such a long good track record. They might have a track record, but they may not have an exemplary track record like the large cap ones. So those are the things that that might have played up, and that probably is showing in the breadth data that you're talking about. So then what happens is, it's much better than in the US, where it's just about 7, 8, 10 of those massive mega caps who are driving the market. It's not like that. In our case today,
perhaps that's broad zone the markets might have gone to, and then maybe they were waiting for the inflation data both places, in India and abroad, in the US, and once that gets sorted out, maybe they'll take the cues and respond accordingly. जी, आपने इन्फ्लेशन डेटा की बात करी उद्यन। महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत की खबर है। फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई फरवरी में सालाना आधार पर 1.35% कम होकर 5.09% पर आ गई है। आज एनएसओ ने ये आंकड़े जारी किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये ब्रॉड कंफर्ट जोन के अंदर तो आ जाता है, आरबीआई के जो 4 से 6 वाला जो जोन है उसके अंदर आ जाता है, पर मुझे अचरज नहीं होगा कि इसमें कमेंट्री में या कॉन्वर्सेशंस में या गाइडेंस जो भी कहें उसमें सेंट्रल बैंक या हमारे रिजर्व बैंक अभी रेट कटौती के बारे में तो बातचीत होगी नहीं, और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उनके तरफ उनकी नीतियां क्या रहती हैं, वो क्या इशारे करते हैं, क्या बोलते हैं, और ये भी उनके आंकड़ों के ऊपर डिपेंडेंट। तो सारे सेंट्रल बैंक का एक टर्म रहा है कि विल बी गाइडेड बाय डेटा गाइडेंस से होगा। तो अगर डेटा गाइडेंस है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी तो अलग, आकलन और उसकी समीक्षा अलग से होती है, तो उस हिसाब से होगा। पर ये वहाँ से क्यूज़ लिए जाएंगे और ये ब्रॉड कंफर्ट जोन के अंदर डेफिनेटली आ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हम और बेहतर हो गए थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक ब्राउनी पॉइंट मिला। आपने छोटे और मझोली कंपनियों के शेयरों में फ्रॉस्ट की बात कही, और सेबी चीफ का भी एक कुछ इस तरीके का बयान आया है। ऐसे में निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, आप चाहे मार्केट तेज़ी में हो या मंदी में हो, ये कहना बड़ा आसान है, माइक के सामने बैठ के एक स्टूडियो में करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, पर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा जो अप्रोच है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो जो जैसे गीता में कहा जाता है स्थित प्रज्ञ होना मुश्किल है, करने की कोशिश की जाए, चाहे वो आप मेडिटेट करके करें या जैसे करें। तो आपको कुछ बेसिक्स देखने हैं जो आप हमेशा करते हैं, एक नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल मूविंग मार्केट में जो करेंगे, उसका अलग कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आपके आंकड़े और तथ्यों के ऊपर होता है, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बाजार जब ऊपर जा रहा है तो जाहिर है दूसरे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपका लेना देना आपकी जो ज़रूरतें हैं, टारगेट्स हैं, आप जो करना चाहते हैं अपने पैसों के साथ, जितनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, और क्या आप हैंडल कर सकते हैं, कितना रिस्क, उस हिसाब से करना। कुछ नया उसको आप ये ना समझें कि अगर पहले आप पैदल चल रहे थे तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था, अब सर्कस आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप वही करते रहें। और कई बार क्या होता है, निवेशक को ये भूल जाते हैं कि कई बार छोटी और बोरिंग चीजें करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। All right. So that was a bit diplomatic. You wouldn't comment on small cap versus the small and medium cap versus the large cap. I guess you said a lot in your lines to be cautious all the time. I look at और रुपए पर भी के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82 रुपये 77 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट से 102.87 पर कारोबार कर रहा था। And I look at the US markets. Well, the S&P 500 and Nasdaq ended down slightly on Monday, with investors preparing for this week's consumer and producer price data, which they hope will provide a better idea of whether the Federal Reserve can begin cutting interest rates in the coming months. The S&P 500 lost 0.1% to 5,117, while the Nasdaq composite slipped 0.4% to 16,019, while the Dow Jones Industrial Average went flat at 38,769. Well, more on this a little later. For the moment, let's go in for a short commercial break, friends. Shall be back very soon. Stay tuned. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत।
आप सभी का। और अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक शेयर बाज़ारों की। ब्रेक पे जाने से पहले लालिमा ने अमेरिकी शेयर बाज़ारों के बारे में बताया था, और अब एशियाई और यूरोपीय शेयर बाज़ारों की बात कर लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाज़ारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई 0.06% नुकसान में रहा, और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.08% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% के लाभ में रहा, और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.9% का उछाल आया। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। वैश्विक निवेशकों को अमेरिका से मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों का इंतजार है। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुट्सी 0.8% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का कैक 0.1% और जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। All right, Udayan, if we were to make a kind of a comparison, Japan and Germany probably going towards recession, or technically are in the recession, but we're not talking much about it. And the US markets are on a strong footing. Of course, inflation has gone up in the US markets. How would you comment on that? Where do you see these three major economies placed in the global markets? So in the US, Lalima, the sense is, I mean, at least what I get from gleaning from what's coming out in the media reports, is that inflation has softened up overall, but the pace at which the markets would like the inflation to soften up very quickly. They want quick signals that Fed is going to start rate cuts, so that then they can go back to their party ways again and get excited. So that's what they want. Markets want to see. They want to hear, but that is not what is being told to them. So you will find this disconnect between what's happening and what people want to hear are two different things. So although things are softening up, unemployment rate has marginally inched up, but the economy is holding up pretty well, and just primarily because of the institutions, the intrinsic strengths of an economy like US, because they've got the institutions. Even if they slip, they can bounce back very quickly, because when you have that kind of depth and that kind of reservoir of capital and labor and everything, technology, so then things start becoming very very easy for you comparatively. That is not the advantage which Europe has and had. They were surviving on Russian gas and oil, and that has got expensive, and they've got messed up. Fortunately, from where we are in India, when we looked there, we said, okay, we are in a good place, and but they need to do well. China needs to do well for us to do well, because we also sell to these people, and we also get stuff from these people. So the more we are integrated with the world, we can't say that, we are okay, and well, too bad guys, see you next year. That's not going to happen. We will get affected. Our exports and our imports and lots of other things will get affected. They have got affected. So, but to realize our full potential, we'll need all these guys back on the feet, do well, because when they do well, we'll also do well. Right, that's as simple as that. All right, let's move on. Have a look at the oil prices. Oil prices rose in Tuesday's trade as geopolitical tensions in the Middle East continue to spur concern. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel. West Texas intermediate crude price was at $78.51 per barrel when reports last came in. So how do you view the oil prices, and how do you see the effect of the global economy and the Indian economy? Lalima, they're trying, OPEC guys, they're trying their level best to make supply cuts so that it remains on the 78 to 80 kind of 85 kind of range. And of course, new supplies have come in from the US. So there is this constant ding-dong oscillating battle between supply and demand, and where the net result eventually is whoever has got a better hand. So as long as there aren't fresh supply disruptions, we can expect more of the same to continue in the future. जी, और अब
मूल्यवान धातुओं की बात कर लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 74 रुपये की मंदी से 65,961 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 31 रुपये टूटकर 74,483 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2,181.61 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी मंदी से $24.66 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उद्यम सोने और चांदी की कीमतों में देखें तो आज थोड़ा सा हमें कुछ गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी एक मंदी का सा दिख रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में देखें तो सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। लगभग 66,000 के आसपास भी पहुंच गया है सोना। अब ये इस तेज़ी के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? क्या केंद्रीय बैंक दुनिया भर के सोने की खरीद बढ़ा दी है या इसके अलावा भी कोई और कारण है? वो तो हो ही रहे, उसके रिपोर्ट्स तो आ ही रहे, पर दूसरी बात ये भी है कि एक रिस्क ऑन बिहेवियर जिसे कहते हैं, जब मूड में होते हैं कि हम मूड में हो जाते हैं, हम कहते हैं चलिए अब बाहर खाना खाएंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, इससे इस टाइप का रिस्क ऑन बिहेवियर है। जब आप दूसरे प्रेशियस मेटल्स की तरफ भी जाते हैं, दूसरी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। आप साइडवेज देखिए, जो आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज, लाइफ टाइम हाइज में चले गए। तो ये एक रिस्क ऑन बिहेवियर है। वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि ये जो बैड न्यूज़ है थोड़ा सा पीछे है। तो कई बार पैसे जो हैं वो ढूंढते हैं कहाँ पे अंडर वैल्यूड है, और वहाँ पे जाके वो रिटर्न खोजता है। तो चाहे वो तेल में हो, चाहे वो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र है वही पैसे लगा रहा है। यहाँ पे जो स्पेकुलेट कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, या जो उसमें फ्यूचर्स कर रहा है, ऑप्शंस काट रहा है, राइट कर रहा है, वो भी इसमें इस गेम में होते हैं। तो वो भी प्राइसेस या मार्केट के कोर्सेज को डिटरमिन करते हैं। Within India recently signed a free trade agreement with the European bloc countries. Among them, one of the major ones was Switzerland. We probably import 80% of gold from Switzerland, but they have left this category out and they have not touched the tariffs on gold. How is it going to affect us? Or I'm not very clear about that, but we is hold world's largest reserves as far as Indian women are concerned. No, that's okay. Even China has been also demanding, and there, Lalima, the number of there have been reports about the number of dollar millionaires in India. Yes. It's probably going to hit about 1 million millionaires. So that itself is a huge demand. So at the higher end, the kind of luxury goods and precious metals and alternate investments, Yes. and other kinds of banking will have its own market. So we haven't opened that, I think, if I'm not wrong. You're right. Financial Yes. services have been, ambit has been kept out, and Yes. Switzerland is known for wealth management. Yes, yes. So those things are going to be at play. But yeah, we are becoming a formidable player in this. Right. जी, उद्यन, आप स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में शामिल हुए और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपने चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। All right, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. PM to participate in India's decade. Chips for Vikasit Bharat lay the foundation of 3 semiconductor projects worth 1.25 lakh crore. After a flat to positive start, the market extended the gains. Sensex gains 165 points. Nifty closes at 22,335. And in the global oil market, intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
Market Mantra.